red button, computer red itself mode. I'll put. Yes, Okay, sir. I Yes, sir. started You it. can. Yeah, I started. So I did that. So see, now this is the planet. So what is happening is, so this is how it is assembled. बीच में धरती आता है, बाकी सब प्लैनेट यहाँ घूमते, अगर जहाँ पर भी पोजीशन है वहां लगाते हैं. तो कैसे लगाते हैं इसको समझो. सन इधर है, धरती से देखते समय अभी अभी कहाँ पर है सन? मकर में है. मकर लड़का पाक सारी सन है इप्पोतिके ट्रांसिट ला मकरम मकरम. सो अभी कहाँ पर है चंद्र? सूर्य कहाँ से? अभी मकर में है सन. ठीक है, ट्रांसिट में आधा गोचार में यहाँ सन है. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं सन पर. सन इधर है तो मेरकुरी किधर होगा? नेक्स्ट प्लैनेट. वेयर विल बी मेरकुरी बी द नेक्स्ट प्लैनेट? नियर टू सन सर. हाँ, नियर टू सन. सन के बगल में होगा. क्यों बगल में होगा? क्योंकि हम अर्थ से देखेंगे तो इसके बगल में ही होना चाहिए. इसलिए मेरकुरी जब देखो इट विल बी कंबस्ट. ओके, एवरी टाइम इट विल बिकॉज वेरी क्लोज टू सन, सो इट विल बी कंबस्ट. सो जब कंबस्ट हो जाता है तो क्योंकि सन के बगल में रहता है, तो मेरकुरी कहाँ पाया जाएगा जनरली? यू विल आइदर फाइंड इन दिस हाउस और इन दिस हाउस. देखा आपने किसी का भी चार्ट निकाल के? किसी का भी चार्ट निकाल के देखो, मेरकुरी विल बी वेरी क्लोज टू सन. इट विल नेवर बी अवे. You will never find it in the 7th house or 8th house. Have you noticed that? Hello? Can I have a response? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes. प्रिया, आपको समझ में आ गया? जी सर. समझ में आ गया. सूरज जहां पर भी है, ओके, किधर भी जहां पर भी सूरज है उसके बगल में मेरकुरी रहेगा. क्यों? क्योंकि वो सूरज के एकदम बगल में रहता है, तो उसके बगल में रहेगा. हम कहाँ से देख रहे हैं? हम भूमि से वहां उसको देख रहे हैं, तो बगल में ही रहेगा. बाकी सब प्लैनेट सब जगह घूमेगा. ठीक है, अब इसमें और एक मजेदार बात देख लो. ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग इज सन इधर है, सन को घूम रहा है ये मेरकुरी, अर्थ भी घूम रहा है इसको. ठीक है, ऐसा घूमता रहता है. वी आर दिस इज आल्सो रोटेटिंग, दिस इज आल्सो रोटेटिंग, सन इज. But when the earth is rotating, the sun seems to be moving around the sun, around the earth. तो हम लोग चार्ट में क्या देखते हैं? यहाँ से देखते हैं, अर्थ में से इसको सब मैप करते हैं. ठीक है, इसको कैसा मैप करते हैं? हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस को, एक तारा को ले लेते हैं. कैसे तारा को? पुष्य नक्षत्र को, लहरी का जो नक्षत्र है वही, दैट इज चित्र को, कुछ नक्षत्र को ले लो. वी टेक इट अप. व्हाई वी टेक अप दैट नक्षत्र? बिकॉज वो क्या होता है, हम लोग कैसे इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं कि मैप ये बनाते समय, चार्ट बनाते समय कैसे कौन सा प्लैनेट किधर है करके देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये सोलर सिस्टम है, समझ लो आप. ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब अपना जो सन है, सब अर्थ है, ये सब इधर घूम रहा है. ठीक है, अब इसको देखना है, आपको हिसाब लगाना है कि कहाँ पर है. इफ यू वांट टू नो वेयर द मैप्स आर, हाउ वेयर द पोजीशंस आर एंड ऑफ द प्लैनेट्स, तो कैसा करोगे? दूर में चले जाओगे. यू विल टेक वन स्टेबल स्टार, नॉर्थ पोल का स्टार, वैसा स्टार को एक स्टार. सो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टार को ले लेंगे. सो दिस इज व्हाट दे डू, दे टेक वन स्टार. It could be Chitrai, it could be any star that they get it. Okay, उसको ले लेंगे. Now imagine you sitting here and you see all the planets. Can you easily see these planets from there? Can you or can you not? Yes sir. Yes. So यहाँ से दिखेगा ना, यहाँ से तो आप लोग आराम से देख सकते हो. So sitting in earth, okay, so now you know this star. So यहाँ से ये जहां पर है इसका हिसाब लगा सकते हैं ना, कहाँ घूम रहा है बोल के. If you take this as this thing, then you can plan and say where this planet will be, right? You can calculate this planet, right? So when you calculate like this, okay, you get the positions of different kind of planets. ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अर्थ में बैठ के
इसका जो हिसाब इसको निकालते हैं, यहाँ से जो हिसाब इसको निकाल के प्लैनेट का पोजीशन बना के उसको ही हम लोग डिग्री के हिसाब से लगा देते, बस हो गया। ठीक है, उसको बना देते। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया सर। सबको समझ में आ गया? तो अगला जाएगा। नहीं आया तो हाथ उठा दो, हम लोग को वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, अगेन किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठा दो, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ओके, अग्रीड, सो दे हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वन में क्या होता है, विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अभी क्या है इसमें, हम लोग इसको ला लेंगे। Sushil, I'll keep you as co-host, okay? So that if somebody raises Sure, their hand, I might not see. If you see, then you let me know, okay? Understood. Okay. So अभी ये चार्ट लगा है. So okay, what this chart indicates? So I said, मैंने क्या बोला, धरती इधर है. तो धरती इधर है तो इसको क्या एक सरकमफ्रेंस कितना आता है, 360 डिग्री आता है. ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 360 डिग्री आता है. इसको हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्रीज में 12 से डिवाइड करते हैं. इसको वी डिवाइड बाई 12. इसको 12 क्यों 12 से, क्योंकि ये 12 घर है. 12 घर को डिवाइड किया तो हमको कितना आता है एक घर का, ईच हाउस हाउ मच विल गेट 30 डिग्रीज. इसका एक 30 डिग्री आएगा, इसका एक 30 डिग्री आएगा, इसका एक 30 डिग्री आएगा. ठीक है, सो वी विल बी गेटिंग 30 डिग्रीज फॉर ईच हाउस. सो इफ इसको पूरा टोटल किया तो कितना आएगा, 360 डिग्रीज आएगा. तो इसलिए एक घर का 30 डिग्रीज बोलते हैं. ठीक है, ऐसा बोलते हैं. पर you should not think that it is actually 30 degrees. It is actually varying. Everything is not the same. Some are longer, some are shorter. ठीक है, Sir, how, sir? they are not. See, अभी यहाँ पर here, if you notice, we say Chandra is Ucham, correct? Amma, sir. Yes, sir. We say Chandram is Ucham here, right? We say उसको क्या बोलते हैं, चंद्र को उच्च बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ टाइम लगता है उसको जाने के लिए. It does not go that same speed. It takes time to go because that is a longer distance to travel. उसको टाइम लगता है जाने के लिए. So whenever a planet is there in a certain position for a longer time, it where do we stay most of? We stay in the where we are comfortable, we'll stay. So moon, when it's staying there, that time will take more time. So they say that is the Ucham Sthan. It will do more good in that place. Okay, so all even though I say 30 degrees, it is actually not 30. In real time, when you calculate, it is not 30 degrees, it will be more. Okay, but for our sake, we are only taking 30 degrees. This is the reason. What happens is they have this bhava chart, this chart, that all saying that no, this house मेरा ये घर है तो बगल वाले घर में भी effect आएगा. If I'm there if near 0 and 1 degree or 30 or 1 degree, I will take care of next house. The effect will be there in the next house. ऐसा करके we discuss and we talk. Okay, this is the confusion it creates. Okay, but when we are studying, we will not put all those things into confusion. We keep this thing apart. If anything that happens within 30 degrees, it will happen with 30. If it is 1 degree, it belongs to the second house. We will not get confused on that. Okay? उसको अभी क्या है, वो उच्च बोलते हैं. यहाँ पर चंद्रमा उच्च बोलते हैं. इसको क्यों उच्च बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो ये थोड़ा टाइम लगता है जाने के लिए. 30 डिग्रीज नहीं रहता है, ज्यादा ही रहता है. पर हमारे सुविधा के लिए हमने क्या किया, 360 को 12 में डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्रीज आ गया. ये टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए यहाँ चंद्रमा का जो रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का इसके यहाँ पर उच्च देते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा टाइम लेता है उधर से जाने के लिए बाकी सब जगह से. तो इसलिए उसको थोड़ा उच्च रहता है इधर, इसलिए उसको उच्च बनाया गया. सिमिलरली जो जहां भी उच्च रहता है वहां पर वो प्लैनेट टाइम ज्यादा लेता है जाने के लिए. ठीक है, सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय द नंबर 30. और कोई आके बोला कि 30 नहीं है, थोड़ा इधर आता है उधर आता है. यस, अग्रीड, मालूम है. पर हमारे जो समझ में है, हमारे जो चार्ट पढ़ने का जो काम है वो 30 डिग्रीज में ही होता है. ओके, सो नो कंफ्यूजन्स. 30 डिग्रीज द नेक्स्ट फर्स्ट डिग्री इज फर्स्ट डिग्री.
There is no, we will not look into shadowing of planet again at all. Or shadowing, reading all will be taken care by nakshatras. So we don't have to worry about that. Okay? So just Okay, keep that sir. in mind. Huh? Just keep in mind 30, 30, 30. People will confuse, but don't get confused. Because I got confused, I don't want you to confuse. With all these intelligent people around, they'll confuse us. Okay? So वो 30 डिग्री में खत्म हुआ तो ये फर्स्ट डिग्री में चालू हुआ. अगर समझो ये फर्स्ट डिग्री में है, कोई प्लैनेट 30 डिग्री में है, तो बोलेगा यहाँ का यहाँ इफेक्ट आएगा. वैसा सब मत देखो आप. डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ. ठीक है? ये 30 है तो 30 है, 31 है तो 31 है, बस वही घर में, बस और कुछ नहीं. ठीक है? सो दिस इज हाउ इट रन्स. ओके, सो दिस इज चार्ट. ओके, दिस इज वी हैव सीन. अभी आपको, अभी आई विल पुट, this is done. We'll go to the next, and I will put one more new slide. Okay, I'll take the same thing again, so don't worry on this. Okay, so we took the same thing. अभी इसमें क्या है, इसको आप बीच में से डिवाइड करो. Okay, we are dividing. Okay, so we divided this. Okay, so this is this side, this is this side. Okay, this is this side, and this is this side. So what do you see? You see Venus, Mercury, Moon, Sun, Mercury, and Venus. Here Mars, Jupiter, Saturn. ठीक है? हो गया ना? So, but in the when you look at the real this thing, okay, I'll draw in the same side. I will not. When we look at the planetary position in the real time, okay, when we put the planetary position in the real time, जो अभी ग्रह कैसा रहता है, बीच में सूर्य रहता है, बराबर, बीच में सूर्य, उसके बगल में क्या आता है, we get बुध, बुध, Mercury, sir. then we get Venus, okay, then we get Earth, correct? This is Earth's Earth, correct? Earth का है. This will be Venus, and this will be Mercury. Okay, after Earth, what will come? Mars. That is why we're planning to go there, no? Mars. After Mars, what will come? Jupiter. Correct? After Jupiter, you will get Saturn. Correct? Anybody has got any dispute on this? ये बराबर है ना? Negative, sir. Spot on. हाँ? Yes, sir. बराबर है. No, I don't hear the other two talking. They'll both the ladies. बराबर है कि नहीं है? बराबर है सर. बराबर. Yes sir, right. हाँ, बराबर है. Sir, बताओ तभी मेरे को समझ one में doubt, आएगा sir. ना कि मैं वैसे बताते जाऊंगा. ठीक है, अभी Sir, देखो. one doubt, sir. बोलिए. Sir, you drawn this orbital and divided them into equal halves, sir. What is the inference I could take it? No, sir? I am only Is there telling the- you how the planets are positioned. Okay, Sun है बीच में, Sun is Okay, in the sir. middle. Then the Mercury is Okay, coming. sir. Then Venus is coming. Okay, sir. उसके बाद this is the Earth. Okay. This is our home. Which one is? Okay. This is our home. Correct? No. Yes, sir. This is our home. Okay. After our Yes, home, sir. Mars का आता है. Okay. Yes, Once sir. Mars comes, then comes the Jupiter. This one is Jupiter का घर. Okay, sir. Jupiter. Then Okay. comes Saturn's throne, right? Now the beauty of it, I don't know if you have noticed or not. That is why I'm saying look at the South Indian chart, not the North Indian, because there are a lot of beautifully done up issues in this. Now, if you look at it, where is Sun? In the middle. Yeah. What is close to that? Mercury. Mercury. Yes, sir. Okay. Then Moon is next to it. Yes, Right. sir. The Earth के बगल में. Okay. Then what after Mercury? What is there? Venus. Sir, Venus, sir. Venus. So Venus. this half is inside the Earth, before the Earth. You saw the beauty?
समझ में आया आपको? जहां पर भी इसी ये जो सब प्लैनेट्स हैं वो धरती और सूरज के बीच में जो है वहां पर है। यू गॉट इट? समझ में आया? नहीं आया? सर एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए सर। ठीक है। अभी ये क्या है? ये सूर्य है कि नहीं? राइट। ओके, वो सूर्य है। एक मिनट, को आवाज नहीं आ रहा, मैं थोड़ा आवाज ज्यादा कर लेता हूँ। मेरा भी कर देता हूँ, मेरा माइक का भी कर देता हूँ। ओके, नो आई विल हियर बेटर। ठीक है, तो ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य किधर है? नो नो सर, द वॉइस इज नॉट क्लियर नाउ। अब क्लियर नहीं है सर, आपका आवाज पहले क्लियर था। ऐसा क्या? मैंने गलती कुछ कर दिया। अभी ठीक है? जी सर। ठीक है। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा था तो मैंने बोला ठीक है, देखो। हाँ ठीक है, अभी देखो, ये सूर्य है। ठीक है, ये उसके बगल वाला मरकुरी है। सूर्य के बगल वाला मरकुरी है। करेक्ट। बुध का है। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। करेक्ट। शुक्र के बाद धरती आता है, भूगोल Correct. आता है। उसके धरती के बाद कौन आता है? मार्स या मंगल आता है। राइट। मंगल के बाद गुरु आता है। राइट, जुपिटर सैटर्न यूरेनस गुरु के बाद सैटर्न आता है। हम सैटर्न यूरेनस को सब नहीं जाएंगे, हमारा सैटर्न से बंद हो जाता है। हो गया? राइट सर। ये धरती के अंदर कौन कौन है? धरती के और सूरज के बीच में कौन कौन है? चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, धरती और इसके बीच में। तो ये सूर्य है, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया। तो धरती तक जो था वो ये यहाँ खत्म हो गया। राइट सर, थैंक यू सर। अभी धरती के बाद कौन आता है? मंगल। जुपिटर सर। मंगल, मार्स या धरती के बगल में मंगल आता है। तो मंगल कहाँ? इधर है, सूर्य से थोड़ा दूर। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद गुरु कहाँ गया? गुरु इधर आ गया। उसके बाद शनि इधर आ गया। तो आउटर प्लैनेट्स जो है, अर्थ का जो आउटर प्लैनेट्स जो है वो इधर है। अर्थ का और सन के इनर प्लैनेट जो है वो इधर है। कभी किसी ने देखा है इसको? Has anybody noticed this? नो। No, not. So see, beautifully they have done it, right? In those days itself. ऐसा नहीं है कि ऐसे लगाना था करके नहीं लगाया। इसलिए आई डोंट वांट टू गो टू द नॉर्थ इंडियन, बिकॉज नॉर्थ इंडियन में ये सब नहीं कर सकते हम लोग। वी कैन नॉट डू बिकॉज हाउस इज मूविंग, दे चेंजिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन द लग्न। तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? जी सर। तो मैं अगला चलूं? जी सर। ठीक है, अगला डाल देते। ठीक है, एक चार्ट निकाल, इसी को डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? व्हाट हैपेंस इन दिस इज, अभी मैंने तो बता दिया कहां पर कौन सा आता है करके। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर वेयर सैटर्न विल कम, वेयर जुपिटर विल कम, मार्स विल कम। अब तो हो गया ना, आराम से याद आएगा ना, कोई तकलीफ तो नहीं होगा। यू कैन अनम्यूट एंड टॉक सो दैट वी आर ओनली 4 or 5 people, so not issue। सब अनम्यूट करके भेजो। ओके, as far as there is no other disturbance। okay, so अभी आंख बंद करने से भी आपको याद आ जाएगा। क्या? व्हाट विल यू रिमेम्बर? यू विल से सन इज हियर, मून इज हियर, एवरीबडी नोस। ठीक है, वी ऑल नो सन इज हियर, मून इज हियर, पर मरकुरी इज हियर। नाउ व्हाट, अभी क्या होगा? आप वो जो पिछले डायग्राम से देखे हो तो मरकुरी बगल में है, तो मरकुरी इधर लगा दोगे, मरकुरी इज वेरी क्लोज। उसके बाद वीनस इधर आएगा तो इधर भी लगा देंगे, एरिस भी इधर आएगा तो इसको भी लगा देंगे, मार्स इधर आएगा तो इसको भी लगा देंगे।
So you will remember all the planet lots. कौन सा planet का कौन सा घर है करके आराम से you can remember. Okay, if you remember where कैसा naturally how the planets are positioned. Okay, so it's so easy and so neatly done. Okay, so since Mercury is very close by, it will never cross these two houses. मैं sun के बगल में ही रहेगा, कभी भी दूर नहीं जाएगा. कोई सा भी चार्ट निकाल के देखो, दूर नहीं जाएगा, सन के बगल में ही रहेगा. ठीक है, so that is the this position itself will tell you where it is. Okay, Venus will show everywhere. अभी मैंने जो बोला था, moon will also be there, will be rotating along with the earth. So that's a different position because it's a satellite, so it will be moving on. ठीक है, moving on. Okay, now what is the difference between, आप लोग अंग्रेजी का बुक सब पढ़े होंगे ना ग्रह के बारे में, पढ़े कि नहीं? प्लैनेट बोलते हैं ना. Hello, am I visible? I am audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. na, yes, na. Sir, Yeah, can so- you repeat, sir? What? Which? Can you? He Okay. said आप planet का book पढ़े होगे ना. He said that only. Yeah, I said, have you read about planets in English? That is what I asked. Oh, okay, sir. Okay. Okay, that is what I asked. Okay, so what the difference between the English planet and in the astrological or the Sanskrit word called graha, there is a lot of difference between both of them. Okay, I'll first explain briefly in English, then I'll explain in Hindi. Okay, so what the difference? English, what is happening is, in the English, we say planet, which is basically a non-luminous structure is called a planet. Okay, if it is a sun, it belongs to star. Okay, sun is a star. Planets are non-luminous things, are planets, which cannot generate its own light is called. Anything that is rotating around around a particular planet is called satellite. That is the English nomenclature. Now, if you apply that in astrology, it will not match. Okay, it is absolute absurd way of looking at planets the way we are looking at it, because the underlying meaning is completely different. The difference is we call it graha. Okay, in graha in Sanskrit is to hold. Graha, the meaning is to hold. Okay, so Surya Grahanam, matlab kya hai? What is the meaning of Surya Grahana? The sun is being eclipsed or being held by something else, which we call it as Rahu. Okay, Surya Grahana, it is holding it. Okay, it is holding sun under arrest for some time. That is why it is called Surya Grahana. So any graha is something that is holding something together. So what does it mean holding? So whenever teaching in Hindi or something, आपने ग्रहण कर लिया. Have you understood? आपने ग्रहण कर लिया. That is what in Hindi we use. In Sanskrit also we use the same grahan. So what is the meaning of it? Grahan, basically it means have you understood or have you grasped it? That is the meaning. Have you grasped it or have you got hold of it? That is the meaning of graha. Okay, so when you look at graha, have you hold of it, or when you say concentration, or have you got the power, this thing, or that means what? Graha means it is something that you have, there is something, some energy is there. Okay, which is holding it together. So it is not necessary that planets, we can't compare with planets. It is stupidity that we are comparing with planets because we don't know, we don't understand the meaning. Graha is completely different. Graha is something that holds the things together. So that means what? Sun is a graha. It's not a planet. For us, it is a graha. Surya is a graha, which is round in shape, which is a graha, which has got certain qualities, certain powers, which it will radiate. Okay, which will do it. Moon is also a graha, which will also hold certain characteristics, certain properties, which it will do. Saturn is also a graha, which will hold it. So graha is basically something where there is a concentration of power or certain qualities are there. So that is why Rahu is given a graha status, because you say shadow planet. It is actually not a shadow planet. It is called graha because there are certain points are there. When you say Gulika, when you say all those things, there are concentration of some energies are there. Okay, some concentration. Maybe visible, maybe not be visible. So when it is there together, we call it, that position we call it as graha. Okay, wherever that thing is which is holding something is called graha.
So don't compare English planet, solar system, sun and stars with our graha. Graha directly translated meaning is to hold it. Okay, so moon is holding certain rocks, gravitation force, certain characteristics. So it is a graha. Earth is a graha. If you talk about Jupiter, Jupiter is a graha. It is holding certain characteristics. Sun is a graha because it is holding sun. We don't look it as a star. We call it Aditya. We don't look at a star. Out of thousands of Aditya, sun is one Aditya. That is, we call it Aditya. We don't call it as sun. We don't call it as graha or planet. We call it as Aditya. Aditya, the thousands of Adityas, out of which sun is one of the Adityas. Okay, so like that. So this is okay. Now I'll put it in Hindi. ओके अभी इंग्लिश में जो आप लोग ने पढ़ा था प्लैनेट करके पढ़ा होगा. प्लैनेट करके क्या बोलते हैं लोग? सन स्टार बोलते हैं, ठीक है. मून सैटेलाइट बोलते हैं, जुपिटर वो सब जो मेरकुरी को प्लैनेट्स बोलते हैं. सो सन को बोलते हैं ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस करके बोल देते हैं. बस जिसमें रोशनी नहीं रहती उसको बोल देते हैं, खुद का रोशनी रहता वो सब नॉन प्लैनेट्स है. जिसका रोशनी है उसको हम लोग स्टार बोलते हैं इंग्लिश में. पर हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रह बोलते हैं. ग्रह का मतलब क्या है? ग्रह मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना. तो पढ़ते समय हम लोगों को क्या बोला जाता? आपने ग्रहण किया क्या? ठीक है, ग्रहण किया मतलब हैव यू गॉट दैट इंफॉर्मेशन. आपको पता चला, आपको मिला कि नहीं, आपके पास वो ग्रहण हो गया कि नहीं करके देख. अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है. प्रिया, आपको ग्रहण हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हो रहा है कि नहीं? ग्रहण हो रहा है ना. ग्रहण हो रहा मतलब क्या? आपको पकड़ में आ रहा है, ठीक है. आपके पकड़ में आ रहा तो मतलब क्या? आपके पास कुछ नॉलेज आ गया तो आपको वहां आ गया. इसी तरह एक एक ग्रह जो रहता है, सूर्य हो जाए, चंद्रमा हो जाए, राहु हो जाए, केतु, वो सबको एक एक क्वालिटी रहता है. वहां पर कुछ एनर्जीज रहते हैं, कुछ क्वालिटीज रहते हैं, कुछ मटेरियल्स रहते हैं, जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं. क्योंकि वहां पर पूरा पकड़ के रखता ग्रहता है. ओके, उसको ग्रहण करके रखता है वो एनर्जीज को, तो इसलिए उसको ग्रह बोलते हैं. हम लोग उसको प्लैनेट स्टार्स करके नहीं बोलते, उसको सबको हमको ग्रह ही बोलते हैं क्योंकि वहां पर एनर्जी. इसलिए राहु को भी दिखता नहीं है तो उसको ग्रह बोलते हैं. ओके, पॉइंट्स रहता है बस, उसको वो जहां पर भी वो एनर्जी रहता है उसको हम लोग पकड़ के रखता है, उसको ग्रह. इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में भी क्या रहता है? क्या रहता है? गर्भगृह. அப்படிதானே சார் மது? கர்ப்பகிரகம் தான் சொல்லுவால. சோ கிரகனா என்ன? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் கிரக? Basically that is the concentration of energy, right? Yes sir, it holds something, sir. It holds something, Holds right? that energy, In a the temple light. also we will call Yeah. Garbhagriha. So very clearly the meaning of graha is to something to hold. Yes Okay. अब ये this is the basic knowledge. अब इसको समझ में नहीं, people don't understand this. sir. In western what they say, sir? Western They don't have this concept. They say planet, star, sun, satellite. That's how they say. They are not able to understand why we call Rahu as a graha. We call Rahu as a graha because that is a position where it has got some energy. It is holding some energy. it is holding the sun. Yeah, yes sir. So it is got. So graha means to hold it. समझ में आ गया? Okay, you got it. That's the difference between the English version and our Indian version. So you don't have to compare with them. Let them understand what graha means. They don't know the meaning of graha, but they talk about big things about it. Okay? You got it? I want the Hindi people to tell me that you understood what I said. जी सर. I got it. Okay, good. Vasu, ungalku purinjicha? Purinjicha. So okay, good. Priya, you understood? Yes, sir. And the other madam's name is not there, so I'm getting always confused with her name. Yes, sir. Yes, sir. आपको भी समझ में आ गया बराबर? हाँ, आगे जाए? जी सर. ठीक है, मैं आगे जाता हूँ. So this is how the planets are नाम देते थे, इस को नाम दिए हैं, ठीक है. So when we see the planets, when we are doing 360 degrees को जब divide करके रखें, तो the very first thing where we start from Aries. Aries से चालू करते हैं, ठीक है. Aries को चालू करते हैं
I'll put it here. Aries से चालू करते हैं. So this is not visible. So okay. This is not showing. Okay. So Aries is Mesh in Hindi. Okay, Mesh in Hindi. Tamil Mesham. Aries, Mesh, Mesham. All means Mesh Rasi. Mesh ka, now what can we say? Who is the lord of this house? You should be remembering by now because I showed this chart. Who is the lord? Mars. So Mars will be the lord of Mars. this house. ठीक है? Mars will be the lord of this house. उसके बाद वाला कौन है? टॉरस. टॉरस का ऋषभ बोलते हैं. इसका कौन लॉर्ड है? वीनस. वीनस या शुक्र का घर. And third is Meenam, मिथुनम in Tamil, मिथुना in Hindi, Gemini in English. ठीक है? इसका लॉर्ड कौन है? मरकुरी या बुध. Okay. And इसका है करक कैंसर. So Kadakam in Tamil. So this is called moon ka ghar. And this is Leo, Sim or Simham. So this is sun's house. This is Virgo, Kanya, and Tamil also it is Kanya. So even in Kerala it is Kanya, Malayalam also it's Kanya. So this belongs to Mercury. So there are two houses belonging to Mercury. Okay. Then comes Tula. Tula is Libra. In Hindi mein also it is called Tula. This is where Venus comes in. Then comes Virchikam. Virchikam shows it as Mars. उसके बाद आता है धनुष. धनुष is basically Jupiter. Dhanu, we call it Dhanu in Hindi. So then comes Makara or Capricorn. Okay, so this is the 10th house. Then comes Aquarius. Aquarius is Kumbham in Tamil. So that is the 11th house. And the 12th house is again belongs to, these two houses belongs to Shani. Okay, Makar and Kumbh belongs to Shani. So Makar और Kumbh किसका घर है? उस शनि का घर है. उसके बाद आता है स्पाइसिस या मीन. मीन किसका है? गुरु का. मीन का 9वें और 12वें घर किसका है? गुरु का घर है. ठीक है? तो ये सब. तो नाउ इफ यू पुट इट ऑल टुगेदर, अभी क्या होगा? आपको पूरा का पूरा 12 घर आपको मिल गया. ठीक है? 12 घर मिल गया. तो ये 12 घर कहां पर है? धरती के अगल बगल है. धरती किधर है? यही धरती है. ब्रह्मा बोलते हैं इसको. धरती है. यहाँ धरती से हम लोग we are seeing all these houses. We are seeing all these houses from the धरती से. We are seeing from the earth all these houses. We are seeing from this place only. We are seeing all these houses. So this is the earth, our mother earth. So this is our earth. So from here we are seeing all these things. ठीक है? तो अभी इतना तक समझ में आ गया सबको? जी सर. Yes, ma'am. इसका हो गया. Okay. So now what we'll do is we will see. There see what happens is this is इसका तो एक हो गया. ठीक है? But there what will happen is we have nakshatras. ठीक है? We have nakshatras. So what is nakshatra? Nakshatra is just a part of the each house has got nakshatras. So how many nakshatras it will have? Each house will have multiple nakshatras. So each house. ठीक है? इसका दिखा दिया था. I think I have a picture of this. I'll make a copy of this. How do you make a copy of this? Okay.
So अभी 360 degree में 360 degree around the earth. So 360 degree around the earth. ठीक है, around the earth is 360 degree. So we are given 30. So इसमें क्या किया, 30 degrees को इधर डिवाइड किया, 30 degrees को इधर किया. We divided it by 30 degrees करके इसको 12 pieces में कर दिया. ठीक है, 30 degrees करके. So this each degree from here to here is one Rashi. This Mesha Rashi is 30 degrees. Is Mesha Rashi. Okay. This Mesha Rashi is further divided into 9 parts. Okay. 9 parts. It is further divided into 9 parts. So each part is how much? 3 degree and 20 degree. Because we divide 30 by 90. When you divide 30 by 9, you get 3.2 degrees. Okay, 3.2 degrees per pada ko milta hai. So there are 9 padas. This is how we divide the houses. These are the padas, 9 padas per house. Okay, so this is how we do it. Okay, in Hindi I will repeat it again. इसमें क्या होता है कि 360 डिग्रीज का ये धरती है, ये 360 डिग्रीज है. तो इसमें 12 डिवीजन करते हैं हम लोग. एक 12 डिवीजन करने से क्या होता है, हमको 30 डिग्री का मिलता है. ठीक है, 30 डिग्रीज का हमको मिलता है. 30 डिग्रीज का हमको मिलता है. ये इस 30 डिग्री क्या हो गया, एक राशि हो गया. इस राशि को हमने कहाँ डाला, इधर डाल दिया. इसको मेष राशि बोल दिया, तो इसको ऋषभ राशि बोल दिया, इसको मिथुन राशि बोल दिया, तो इसको कर्क राशि बोल दिया. तो इसका एक का 30 डिग्रीज का हो गया. पर इस 30 डिग्रीज को क्या करते हैं हम लोग, 9 से डिवाइड करते हैं. 9 से क्यों डिवाइड करते हैं, कितना ग्रह है, 9 ग्रह है. तो 9 ग्रह से डिवाइड करने से क्या होता है, उसको 3.2 डिग्रीज आता है अपने को. तो 9 से, सो इसका 3.2, तो पादा कितना आता है, तो इसमें 9 पादा, इसको पादा बोलते हैं. ठीक है, इसको पादा बोलते हैं. सो 9 पादा एक राशि में आता है. ठीक है, एवरी हाउस विल हैव 9 पादा. इसमें देखेगा तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पादा आएंगे इसमें. ठीक है, एवरी हाउस विल हैव 9 पादास, ईच ऑफ 3.2 degrees का. Okay, so this is how padas are divided for each and every houses. So समझ में आ गया ये? Yes, sir. Hello, समझ में आ गया. Okay. Yes, sir. Sir, on the sir 2.5 degrees is Purila, sir. Can you please repeat? 3.2 degrees என்ன இருக்கு? One nakshatra pada, sir. இப்போ இது this is there, no? How many planets are there in astrology? 9 planets, sir. So you divide 30 by 9. 2.5. Okay. 3.2 you Sorry. will get. 3.3. Yeah. 3.2 you will get. Yeah. So how many will come? Okay. 9 padas will come. Yes, sir. Okay, 9 padas will come. So every house will have this 9 padas. Yes, sir. So if we calculate all this 9 into 12, how much? 108, sir. So 108 nakshatra padangal vandacha. Yes, sir. So what is this 108 is? 108 nakshatra padas. Yes, sir. Okay. What is the distance from earth to sun? Few million light years. 108 times 108 earth diameter. Sun diameter Okay. is earth distance. Okay. 108 times of the diameter is the earth distance. Okay, sir. Okay. That's why, for that reason, we are also chanting every mantra 108 times. 108. We are Is that talking any about logic each and in that? every nakshatras. Every nakshatra, when you try to calculate, it will come to 108. That is why we say, when we want to read, we either say, what we will say? Either say, we will say, read 9 times, minimum 9 times, or do any number of times. Basically, 9 times is at least you are covering all the first, actually one house, 9 padas. All the planets you are trying to remember there. Okay.
इसलिए हम लोग 108 को पूजा मंत्र बोलने से भी 108 बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। 108 मंत्र कम्स फ्रॉम दिस ओनली, बिकॉज़ 108 मंत्र कहां से आया? ये पादा जो है 12 घर में कहे तो 108 नक्षत्र का हम लोग पादा कवर कर देंगे। सो वी कवर इट अप। ओके, समझ में आ गया सबको? Anybody has got any doubts? We will stop here. We will go ahead. Yes, I'm sir. too Sir, on the fast. 2.5 you were selling, sir? Where did I say 2.5? 2.5? Okay, sorry, I 3.5 guess gonna my have. Yeah, you are seeing Okay. upside down or what? 3.2 को upside down you are sorry, seeing. sorry. 3.2 is what? आप लोग को समझ में आ Okay. गया? If I am going fast, मेरे को धीरे जाना पड़ेगा, इसलिए समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So सबको समझ। So we'll go to the next step. Okay, so this is how we calculate and we try to do. Okay, so इसमें क्या होता है? What happens is 4 padas belongs to one nakshatra. क्या होता है? 4 padas belongs to one nakshatra. So that means how many nakshatras will come here? This will become 2 and this will become another nakshatra. So we always will have 2.5 or 2.25 like Two and that. half. 2.5, 2.25 will get, because एक ही है ना इधर, they are getting only one. Okay, हर घर में 4 पादा बिना के एक नक्षत्र बन जाता है। समझ रहे आप? एक नक्षत्र बन, 4 पादा बना के एक छत्र। ये इसमें तीसरा भी आता है, पर इसका जो एक्सटेंशन नक्षत्र किधर जाएगा? बगल वाले घर में निकल जाएगा इधर। ये भी 4 ले Sir, can you लेगा। repeat, sir, in English, sir? See, every house, every Rasi will have 9 padas, out of which 4 Yes, sir. padas will belong to one nakshatra. Yes, sir. Okay, the next 4 will belong to the next nakshatra. Yes, sir. The next 4 will belong to the next nakshatra. Yes, sir. Okay, that means what? How many nakshatras you will have per house? We will have 3 nakshatras. Yes. 3 nakshatras per house. Correct, no? Yes, ma'am. Yes, sir. We will get 3 nakshatras per house. समझ में आ गया ना आप लोग को? 3 नक्षत्र एक घर में आएगा, एक राशि में 3 नक्षत्र आएगा। अब इसमें कौन कौन सा आएगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका। कार्तिका। So अश्विनी is केतु, भरणी is शुक्र, कृतिका is सन। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग क्या बोलेंगे? अश्विनी है आ गया तो इधर ये अश्विनी बोलते साथ ही ये फर्स्ट पादा बिलोंग्स टू अश्विनी। भरणी बोले तो 5 to 8 is भरणी। 9 to 9 of this and 1, 2, 3 pada of mesh of Rishabha Rashi will become Kirtikai. This will become Kirtikai. समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आया? Ashwini belongs to Ketu, Bharani. भरणी शुक्रन, Venus. Okay. Kirtikai is Okay. sun, Surya. Okay. Surya. Okay. सुनिता and प्रिया, both of you understood? आप दोनों को समझ में आ गया कि फिर से बताऊं? हाँ जी सर। हाँ, सर आ गया। हाँ जी सर समझ आ में आ गया। गया, समझ में आ गया। तो ऐसे आता है। एक्सक्यूज मी। सो द वेरी नेक्स्ट वन, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी 5 आएगा। ये 8 है, ये 9 है, छोड़ दो। सो इट विल कम, सो दिस विल बिकम रोहिणी। रोहिणी इज व्हाट? मून। ओके, Rogini, next Sir. Mrugasesha. Rogini, Purila, sir. What you're telling, sir? Is it the nakshatra pada 5 to 8? 5 to 7. Oh, okay, sir. 5 to 7 will be Rohini. Yes, sir. Okay. Then 8 and 9 will be Mrigashesha.
Okay. That is Mars. तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर अश्विनी आ गया, भरणी आ गया, कृतिका आ गया, रोहिणी आ गया, उसके बाद मृगशीर्ष का दो आया, फिर दो पादा इधर आएगा। ओके, दो पादा मार्स का इधर आएगा। ओके, मार्स has two padas will come Gemini. in Gemini. Suppose that Arudra will come here, 4 padas. This is Arudra. Rahu ka pada, 4 padas will come. Then you will get Purarposam, Guru ka. You will get Guru ka, Purarposam. Okay, that will come here. So the leftover will come. Then it will come. The leftover one will come here, Guru ka nakshatra. So it will finish the 4th one. So here how many nakshatras? Next what will come? Then Pusha. Pusha is Saturn. So Pusha is Saturn. Pusha and Saturn will come here. Saturn का 4 नक्षत्र है. उसके बाद आएगा Ashilesha or Avitam in Tamil. So you will have 4 nakshatra of rays here. This is Mercury. This is Saturn and this is Mercury. ठीक है, अभी क्या हो गया, इधर था आरुद्रा राहु का मंत्र, उसके बाद गुरु का था, गुरु का क्या 3 इधर आता पादा, 1 इधर आता, उसके बाद शनि का 4 पादा आता है, उसके बाद इधर अश्लेषा का 4 पादा आता है, अश्लेषा का 4 पादा आते समय ये खत्म हो जाता है। ओके, इसका जो ये है ये खत्म हो जाता है। फिर से यहाँ का जो केतु है वो इधर आ जाता है, केतु का 4, दैट इज बिकम्स मघा हियर। दिस इज मघा and it belongs to केतु। उसके बाद ये जो शुक्र का जो बरनी है वो इधर आ जाता है, इधर ये पूर्व फाल्गुनी हो जाता है शुक्र का। उसके बाद क्या आता है, एक कृतिका का, ये 8 हो गया ना, एक उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी 1 आता है, सेम थिंग विल रिपीट अगेन। उसके बाद 3 इधर क्या आएगा, उत्तर फाल्गुनी, 3 padas will come here। ठीक है ना, उत्तर फाल्गुनी also belongs to Shukran? No, Surya. Oh, Surya. Okay. Purva Falguni is Shukran. Uttar Falguni is Surya, sun. Okay. So the moment you finish, जैसे उत्तर फाल्गुनी हो गया तो क्या आएगा इधर, फिर से 4 आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हस्ता। यहाँ रोहिणी है तो यहाँ हस्ता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, देन यू विल गेट 2 चित्रे, मार्स का 1 2 3 4, इफ यू टेक इट विल बी मार्सस चित्रे, चित्रे मार्स का चित्रे। उसके बाद यू विल गेट स्वाति, स्वाति इज व्हाट, राहु, so you will get 4 of it. After Swati you will get again, you will get 3 of 3 क्या आएगा इधर, गुरु का, विशाखा, गुरु का। ठीक है, then you will get 1 guru here, विशाखा, because 4 has to come here। ठीक है, 1 2 3 4 इधर आएगा। विशाखा के बाद इधर आएगा अनुष्यम, अनुष्यम इन तमिल, अनुराधा इन हिंदी। ओके, अनुराधा का इधर 4 आएगा। अनुराधा के बाद then you will get ज्येष्ठा, ज्येष्ठा is Mercury, you will get here। This is Anuradha, Shani ka, and this is Mercury ka। So you call it Anuradha and you call it Jyeshta। Okay, so now this is finished because Jyeshta has come, it comes means that's the end of it। Here also we finished off with Mercury। So again the same cycle will start। We'll start with Mula, Mula is Ketu, 4 will come here। Okay, then उसके बाद क्या आएगा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा विल बी शुक्र का 4 आएगा। पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा how many you will get, 1, because 4 4 8 1, सन का इधर उत्तराषाढ़ा आएगा। उत्तराषाढ़ा के बाद 3 इधर आएगा, 1 2 3, उत्तराषाढ़ा विल कम हियर। आफ्टर उत्तराषाढ़ा के बाद क्या आएगा ऊपर, what will come here, 1 2 3 4, this will be Tiruvonam in Tamil,
Sravana in Hindi. Okay, moon ka. After moon, there will be you'll get 2 of here is Mars ka. We call it Dhanishta, or in Tamil we call it Avitama. சதயம் சதயம். இல்ல இது என்னப்பா இதுல தமிழ்ல வாட்ஸ் இஸ் நேம்? மது, நீங்க சொல்லணும் டக்குனு. திருவோணம் அவிட்டம். புரியல சார். அவிட்டம் தான் சார். அவிட்டம் தான் சார். So in Tamil we call it Avitam. In Hindi we call it Dhanishta. 2 padas of Dhanishta will come. Okay, हिंदी में इसको धनिष्ठा बोलते हैं, तमिल में इसको अविटम बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये दोनों इधर आने के बाद you will get 2 more here. So this 2 also will be Mars ka. சதயம் Mars only 2, because only 2 padas, 4 padas we have to complete, no, for one nakshatra. 1 2 3 4 padas will complete. Okay, so Mars ka. So after Mars you will get Sadayam or Sadabhishta. So you will have 4 parts of Ragu here. Okay, Ragu ka Sadabhishta. Okay, after Sadabhishta you will get Purva Bhadrapada. Purva Bhadrapada is Guru ka nakshatra. Guru ka. So Guru, how many Gurus will be here? 3. Only 1 2 3 padas, and the 4th pada will be here in this. Then you will get Uttar Bhadrapada. Okay, you will get Uttar Bhadrapada. This is Shani ka pada. Then you will get Revati ka 4. You will finish it up. Okay, so 1 2 3 4 Revati ka, Mercury ka Revati will finish it. So like that we have calculated how many nakshatras we have said. 27 nakshatras we have said. I will written it down. I will share it again. Okay, समझ में आ गया? ஓகே தான். No, the Hindi speaking. Priya and Sumita, are you able to, आपको समझ में आ गया? सर हाँ जी सर. So ये जो 27 जो बोलते हैं 27 नक्षत्र हम लोग इधर कवर कर दिए पूरा का पूरा. ठीक है, पूरा का पूरा. तो this how, so इसमें क्या है, what is the difference is from here to here, this is one set. 1 2 3 4 is one set. Okay, and if you look at it from here to here, this is one set. Okay, and then finally from here to here, this 4, from here to here, this is one set. ठीक है, इस क्या सेट है? यहाँ केतु है, यहाँ पर भी फर्स्ट पादा का केतु का आता है. ठीक है, यहाँ जो मूला है वो भी केतु का है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग तमिल में? इसको मेष विधि बोलते हैं. मेष विधि. हाँ Sir, can you repeat, sir, that Mesha Vidhi, please, sir? This particular, from this four houses. Okay, yes, starting from Mesham, it's called Mesha Vidhi. Okay, sir. Okay, I'll repeat again in Hindi. Okay, in a different fashion, but for Tamil people or Hindi speaking, English speakers, so this is called Mesha Vidhi, or you can say Mesha Street. Okay, from Simha, when it up to the Virchiga, it is called Simha Vidhi. Okay, and from Dhanush to Meenam, it is called Dhanur Vidhi. Okay, for the rest of the people, अभी यहाँ का ये यहाँ से जो 4 घर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेष का गली है. यहाँ से यहाँ का ये 4 जो घर है, मेष का गली है. ये सूर्य गली है. यहाँ से 1 2 3 4 क्या है? सूर्य का गली है. ये धनुर का गली है. कहाँ से? धनुर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और मीनम, ये 4 मिला के इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं धनुर्विधि, और धनुर का रास्ता है, धनुर का गली है करके.
ओके, आप याद रख लो, जैसे ही कोई बोला धनुर का मतलब मेष का है तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद हो जाना चाहिए। जैसे धनुर का बोले, जैसे सिंह का बोले तो ये 4 घर, वैसे ही इसका धनुर का बोले तो ये 4 घर। इसको आप याद रखो। इसको क्यों याद रखना करके बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सा नक्षत्र कौन कौन से पादा में कहाँ कहाँ D9 आता है, तब ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, अभी इसको याद रख लो कि मेष विधि में मेष मेष गली कौन सा है? मेष, वृषभ, मिथुना एंड कर्क। सिंह गली कौन सा है? छठा था। सिंह, कन्या, कन्या, तुला, तुला, वृश्चिका। and दिस इज वृश्चिका। सिंह का गली। देन धनुर, मकर, धनुष, मकर, मकर, देन कुंभ, देन मीनम। इट इज वन कुंभ। सेट। तो दिस इज धनुर गली। ओके, इसको याद रख लो आप। गली। ओके, 4 घर को डिवाइड कर दो। ऐसे इसको याद करके रखोगे तो आप लोग को वो D9 जब बताऊंगा कहाँ गिरता है, कैसा गिरता है करके, तब आपको दिमाग में फट से आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया अभी तक? यस सर। प्रिया एंड सुमिता, यू आर एबल टू फॉलो? आपको फॉलो हो गया? इसको आप याद रख लो। ये धनुर का गली है, ये सिंह का गली है, ये धनुर का है, वो मेष का गली है। ये 3 घर आप याद रख लो। ये बहुत काम आएगा। कब आएगा? जब आप लोग को D9 पढ़ने में जो आता है तब आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब इसके लिए व्हाट्स द टाइम? We have time? 10. You want to wind up? No. Yes, sir. Just for me. हाँ? Yes, sir. Yes, ठीक है, अगले हफ्ते इसका आप पढ़ लो आप। एंड प्रिया एंड सुनीता, आर यू ओके? अगले हफ्ते मीट करेंगे कि और कुछ Yes, sir. कुछ डाउट है कि आपको इसमें? Yes, sir. No, sir. हाँ, डाउट नहीं। आप हाँ? ये नक्षत्र लिस्ट विथ दैट கேது அஸ்வினா கேது அப்படி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த லிஸ்ட் கொடுக்கறலாம்னா? ஓகே. That I will give. I have a nice chart. Okay, I will share that chart. I will have chart like this. Wait. That in Excel you shared last time you shared that one, Anna? It is better You than prepared. That one is that also will be there. Libra, I will have chart Okay. like this. No, I would have done this like this. I would have made, no. Remember, Mithuna Yes, will be correct. like this. Yes. So we put Mithuna here. You will be able to see what are these. So I will share this thing later. Okay. अभी के लिए Okay. क्या है? Okay. बस just remember, ये मेष विधि, मेष गली, ये हो गया सिंह गली, ये हो गया धनुर गली। सो एक में 9 पादा आता है। 9 पादा में एक घर में 3 नक्षत्र का घर आता है, पर ऑल द नक्षत्र आर नॉट सेम। एक ही साइज का नहीं रहता, कहीं 2 का रहता है, कहीं 3 का रहता है, कहीं 4 का। इसमें खूबी क्या है, जब भी नक्षत्र इधर काट के आता है, ठीक है, व्हेनेवर इट इज कटिंग 2 हाउसेस, ओके, यहाँ पर कट होता है, ठीक है, गुरु। सो व्हाट, ये कटिंग जब होता है तो ये हमारे प्रेडिक्शन में भी काम आता है। किसी को काटता है, वो ऑपरेशन होने का है तो काटते हैं ना, यू कट द ऑपरेशन में, राइट? सो दैट फैमिली से डिवाइड होता है, तो दिस ऑल दिस पोजीशंस विल कम देयर। सो यू गिव इम्पोर्टेंस, दैट इज व्हाई आई एम स्लोली टीचिंग। ओके, सो व्हेन इट इज अभी आप यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इट विल शो व्हेन द फैमिली विल स्प्लिट। कब जान जाएगा, when the son will go when split from the family, when you will get operated, cut होगा क्या नहीं, वो सब ये कटिंग में आता है वो। and there are what, वो कौन सा प्लैनेट है कटिंग का? सन है, सन आता है, करेक्ट, गुरु आता है, और कौन आता है? मार्स। मार्स को कहाँ बोलते हैं? काटता है बोलते हैं, ठीक है। सन हील्स बाय ऑपरेटिंग,
कट करके हील करेगा सन. मार्स क्या करेगा? कट करेगा. When somebody is butcher, Mars will be working for him. You will see it will fall because he is into that cutting business. ठीक है. तो गुरु also, गुरु what he will do? फैमिली से बाहर निकाल देगा, डाइवर्स कर देगा. So गुरु का इसलिए वो आधा आधा है, इधर उधर रहता है. So all these half planets are all risky planets. Sir, one doubt, sir. Can we discuss any persons who are barber or doing scavenge These सब working or everybody's any tea shop, basic sir? boss. Now I'm not going to discuss. When we are Not discussing now, the chart, not now. you bring Obama chart also, it's okay. Or you bring Barber chart also, is okay. You bring Butcher chart also, is okay. We will analyze that chart. But just that we should understand the basics. अभी तक clear है? Yes, sir. So you will be having Clear the enough data to munch for the week. So we will meet next week. Huh? There's a lot. नहीं ऐसे समझने से ही ऐसे when I teach like this only, you will remember it throughout your life. नहीं तो भूल जाओगे. Correct ना. Now you will not forget. बताया था 9 पादा. Yes. इसको मेरे को मेष विधि बताया था. अच्छा हाँ याद है. Now you will also remember nakshatras. You will remember how it is divided. That concept should be there in your head. ठीक है? So next week, Okay ना. I will continue from this, wherever we have left. Then we will go to the next step. Okay, it will be interesting. I will go a bit slow. You pick it up. कुछ doubt है तो हाथ उठा के रोक दो मेरे को समझ में नहीं आया बोल के. So then I will teach again. ठीक है? Madhu, you are okay with it? Sir, Madhu? எனக்கு எதுனாலும் okay, sir. இல்ல இல்ல Sir, புரிஞ்சு எதுனாலும் okay. இல்ல இல்ல இப்போ சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் புரியுது புரியுதா? sir. அதெல்லாம் புரியுது sir. No And, worries. Sir, Sumit, recording மட்டும் sir. no recording, மட்டும் no sir. recording. Sorry, no recording. No recording. No recording. That is सुशील, आपको समझ में आ गया? जी सर, बिल्कुल सर. Thank you. And Priya and Sumit, आपको जी सर. जी सर. समझ में आ गया? तो अगले हफ्ता क्या करेंगे? आप भी पढ़ो, जो भी पढ़ना आप पढ़ो, जो भी पढ़ना है. अगले हफ्ते क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से जहाँ छोड़े थे, यहाँ से अगले जो विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप जाएंगे. एक एक करके पढ़ के जाएंगे तो बेसिक आ जाए. तो उसके बाद हम लोग फटाफट विल स्टार्ट रीडिंग लाइव चैट्स. ठीक है? कॉन्सेप्ट सिखाते जाता है एक एक हफ्ता एक एक करके. सो नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट दिस नक्षत्रास एंड ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस. ठीक है? ओके देन, थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट. Okay ना. हैव अ Thank गुड you. वीकेंड. नेक्स्ट night. वीक विल मीट. थैंक यू. गुड नाइट. Yes. यस, थैंक यू. Thank you everyone. थैंक यू. एंड स्टॉप. अरे इसको कैसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं बाबा? सर वो रेड बटन होगा वापस स्टॉप करने के लिए. हाँ